Ready to go? Yep, you're on our way. Where? Almost. जिस घोंसले में पला बड़ा वहाँ आकर फिर छोड़ जाना मुश्किल होता है. Thank you for waking up early. Mothers are amazing. To see you leave, it tears her heart. फिर भी उनका दिल में सिर्फ प्यार ही है. And her face is all happiness for you, because you're happy being a gypsy. Okay. First time Susie came into my parents' ancestral home, she was immediately embraced into the family. Love broke through language barriers. We rode for a couple of hours and stopped for breakfast, not because we were hungry, but because I wanted to eat something specifically in Golaghat. This is the classic puri sabzi of Golaghat that everyone who knows stops here for. And there's Susie's classic breakfast of oats. She's waiting for the hot water to be delivered. Pull her. Encourage. Doesn't it taste different? Well, it tastes good. Yeah. पूरीज के लिए मैं उतना पागल नहीं हूँ, पर गोलाघाट की पूरीज के साथ बचपन जुड़ा है. My memories of eating puris at Golaghat for the first time are so old, so young, that I don't even remember them clearly. पिताजी जो अब नहीं रहे, उन्होंने इनका सिंपल स्वाद पहली बार चखाया था. After a nostalgic breakfast for me and a healthy one for Susie, we were on the road again. You often see temples and shrines by the road across India. They're energy centers that dot Mother Earth. Guess to acknowledge that energy aligns us and refreshes us in the midst of our journey. कई साल पहले जब we were new into our relationship, अफ्रीका के किसी कंट्री में we were on a road trip. जब हम कुछ tall grasses का पैच से गुजर रहे थे, मुझे लगा वो काजीरंगा जैसा दिख रहा है, क्योंकि tall elephant grasses काजीरंगा की खासियत है. तभी सूजी ने मुझे पूछा, Doesn't this look like काजीरंगा? तभी मुझे पता चल गया, we are a click fit. Been to many wildlife sanctuaries around the world, but nowhere can you spot rhinos from the highway. ये स्क्वायर पैटर्न की बैम्बू फेंसेस कहीं भी देखता हूँ तो असम का याद दिलाते हैं. असम की चाय पत्तियों का खुशबू ही अलग होता है. कभी भी किसी और देश में या कॉन्टिनेंट में एक कप असम टी पीता हूँ तो वो कप इन बगीचों तक मुझे खींचे ले आता है. Talking of tea, it was time for a chai break. ऐसे रास्ते की कोने में एक छांव की पेड़ के नीचे का चाय का दुकान का स्वाद ही अलग होता है. Oh, not happy.
Wonder if his bad leg has anything to do with his mistrust for humans. By noon it is too hot for Susie to keep wearing the riding jacket, and when she does that, मैं बाइक के स्पीड 60 के ऊपर नहीं ले जाता हूँ. We have a lot to learn from trees. Look at these red flowers. Despite being on a highway, they're blooming as brightly as they would in a serene forest. वो हमसे गुस्सा होकर अपनी रंग कम नहीं कर रहे हैं कि हम उनके ऊपर बाइक का टॉक्सिक फ्यूम्स छिड़क रहे हैं. With digitization reducing paper usage, hopefully forests will flourish and bamboo will be sparingly used for making craft items rather than pulverizing tons of them at a time to make paper. And hopefully more affluent Indians wouldn't pick up the bad Western habit of wiping their bums with paper. Even though मैं असम में ही पला बड़ा हुआ, नलबारी मेरे लिए नया है. कभी इस तरफ आया नहीं था. बचपन में एक के बाद एक 3 कुक्स हमारे घर में नलबारी से ही थे. तो तभी मैं सोचता था नलबारी में सिर्फ कुक्स ही उगते हैं. To a pair of untrained eyes, all this looks the same across Assam. लेकिन किसी को जो एक जगह पे पला बड़ा हुआ हो, छोटी छोटी differences, रहन सहन, how they dress, भाषा की उच्चारण में differences उभर कर आता है between Lower Assam and Upper Assam. And after almost 10 hours on the bike, on our first day, this is home. यहाँ तक हमारे साथ आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए.